hopefully internet will play. Looks like these days a lot of people spending time on internet, especially over the weekend. So sometime it goes down. Even in the morning we had another class, and after a while the session went down. But let's hope Krishna's mercy it will maintain. So Hare Krishna, everyone. Welcome everyone in Shri Īśopaniṣad sessions, and in this series we are doing whole 18 mantras, and we are going very slow, discussing different scenarios, different analogies, different examples, different purports. And Srila Prabhupada ji has given very nice purports which we can understand, which we can relate. A lot of people in Vedanta, they know these 18 verses by heart, which is not hard thing to do. But rather than memorizing, to understand and understand in such a way so we can implement these verses, the knowledge behind them in our life, that's more important. Hare Krishna. So that's all through Srila Prabhupada ji. Let's do the Mangalacharan, take the blessings of Guru and Acharyas, and then we shall resume. Ajnanatimirandasya Jnanajarashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudapada Kamalam Shri Gurun Vaisakam Shri Rupam Zagrajatam Zahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripau Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, Samaved Bhakta Vrinda ki jai, Jai Jai Shri Radhesh. Hare Krishna. So let's resume. So very quickly, the first 3 verses along with the invocation verse, that's a theme where we understand the very first verse says that we need to detach from material world, and then we need to attach to Krishna. Then we will be very harmonious. We will be full of harmony if we will attach to Krishna. But verse 3, if we will not attach to Krishna, then what will happen? Of course, there will be punishments. It's very similar than the rules and regulations are there on the road. And as long as we follow the rules and regulations, we can enjoy the ride, especially in this nice sunny weather in London. But if we will break the laws, we will break the rules, then the punishments are there.
Not that the government wants us to punish, but of course, to keep us on the track, they've got to be some rules and regulations. So that's what we understand in the first three verses and the invocation verse. So हिंदी भाषी भक्तों का भी स्वागत है. हमने जिस तरीके से देखा श्री ईशोपनिषद के अंदर सबसे पहला वर्स ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इस वर्ष के अंदर भगवान पूर्ण है और भगवान से हम निकले हैं, हम भी पूर्ण हैं. और पूर्ण भगवान की पूरी कृपा पाने के लिए हमें भगवान से अटैच होना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि हम मटेरियल वर्ल्ड से ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि हम मटेरियल वर्ल्ड छोड़ देंगे. इसका मतलब ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है उसके अंदर से हमारा झुकाव है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे 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 अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा. अगर कोई हमको क्रिकेट देखने, फुटबॉल देखने या मूवीज देखने के लिए बुलाएगा, या अगर कोई टेम्पल में दर्शन के लिए बुलाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली ये स्वभाव हो जाएगा कि हम मंदिर जाना चाहेंगे, भक्तों से मिलना चाहेंगे, भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे. और क्योंकि आप सभी यहाँ पर हैं, तो इससे पता लगता है कि आप सबका ये ऑलरेडी झुकाव है, जो कि एक गुरु कृपा, भगवान की कृपा मानी जा सकती है. और वर्स 3, अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम भगवान से ना जुड़ें और सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में ही लगे रहें, तो इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आती हैं. जो आजकल कोविड चल रहा है वो उसमें से एक एग्जाम्पल है. और बहुत सारी दिक्कत, हम जिन चीज़ों के लिए यूजुअली भागते रहते हैं, चाहे हम उसे मनी कहें, पावर कहें, प्रेस्टीज कहें, फेम कहें, नेम कहें, कोई भी ऐसी चीज जिस चीज के लिए हम दुनिया भर में भागते हैं, काम करते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, हम अपनी अगली जनरेशन को भी उसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सारी जिन लोगों के पास में हैं अभी प्रेजेंटली और जो पास्ट में थी, हम समझ सकते हैं कि वो लोग भी दुखी रहते हैं until unless वो डिवोशनल सर्विस करना शुरू नहीं करते. So the devotional service is the essence. Anything we have doesn't really matter whether it's good or bad. We need to implement that in the service of Krishna. How we can do it, that's what we're going to figure out now in verse 4. तो मंत्र 4 जो हमने देखा, उसके अंदर हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से भगवान को समझा जा सकता है. और भगवान को समझने के लिए हमको भगवान के दिए हुए ग्रंथ, गुरु और साधु संघ, इन सब की कृपा की जरूरत पड़ेगी, इन सब की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारी जो लाइफ है ये बहुत लिमिटेड है, हमारे जो सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और हम अपने सेंसेस से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, सिर्फ मनोचित से सोच के, विचार करके भगवान को नहीं समझ सकते. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब कहा भगवान को, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं वो रूप दिखाता हूँ, विराट रूप, लेकिन उसे देखने के लिए आपको ये भौतिक जो चक्षु हैं, तो भगवान ने जो दिए थे वो ज्ञान के चक्षु दिए, दिव्य चक्षु दिए, कि ये जो आंखें हैं ये भौतिक हैं, इससे आप मुझे नहीं देख पाओगे, तो आपको स्पेशल विजन देंगे. सो दैट्स व्हाट is required, and our guru, our shastras give us that spiritual vision. With that we can understand Lord, we can understand Krishna. So that's what from verse 4 to 8 will do. Currently we are in verse 4 and 5, they will go together, and they tell us that it's hard to understand Krishna. And we will go further and we will see how it appears like the two different shlokas, two different mantras, they contradict with each other, but they don't. They appears to be contradict with each other, but they don't contradict. And we will see how it happens. But this is what we need to understand, that that's where the most important shastras and those gurus who can make us understand shastras. So of course, in the market these days, there are many gurus we can't trust, because they are working not for the spiritual progress of their own or their disciples, but they are working towards their material gains. And that's what we need to figure out.
Shastra says very easy way to find out who is an ideal guru, a real guru, is that guru will do two things. Guru will never say I'm God. Guru will always engage us in the service towards God, not in his own service. Right? So, of course, disciples would like to serve Guru, but with the vision that serving Guru, we will get more closer to Krishna, more closer to the God. So if somebody will come and say, there is no other God, I'm the God, you need to serve me, we need to understand something is wrong. If somebody will come and say, well, I have seen God, I've experienced God, I can help you to understand God. And if you do this, you will get closer to the God. And for that, if you need to bypass me as well, that will do. And a lot of gurus, they also do that, which means that they always say, I can give you the instructions, but if you follow the instructions, you will get to the God. So I'm there just as a guide. I'm not the destination. Destination is the God. And I'm also the servant of the God. That's one thing that all the real bona fide gurus will say, that I'm also servant of the God. तो जितने भी गुरु हमको मिलें और जो भी ये कहें, अगर वो अपने मटीरियल गेन, अपने भौतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ दिक्कत है. लेकिन अगर वो गुरु ये कहें कि मैं भी भगवान का दास हूं और मैं उन्हीं का प्रचार कर रहा हूं, तो हम समझ सकते हैं कि वो प्रमाणिक गुरु हैं. They are bona fide spiritual masters, and we can follow, we can take the shelter from them. So this is coming from, this categorization is from the purports of Srila Prabhupada Ji. We have seen them. We were on the last bit, play your part and you will be given understanding. So to get the understanding, we need to do something. We can't get it just because of our own. So for example, here in England, there are many awards being given by Queen. And so OBE is one of them. Now, no one could say that I have done so much. Nobel Award is another one we can think of, which is globally. No one can say that I have done so much, give me the Nobel Prize. Or no one can say I have done so much service, ask the Queen that you should give me this award. No, we can serve as much as we want. And if the global community think that we deserve Nobel Prize, then we get it, right? It's based on our efforts, but just because of our efforts, we cannot claim the award, right? So Queen is not obliged to give any award to anyone because somebody has worked that much. But yes, Queen or the community, they can observe, they can analyze, and then they can decide that who should get this award. So in the spiritual world, that's how it goes, that we can work as much as we want, but we can never claim, or we should not anyways, that we have done so much, so we should get this. No, because we are not doing anything to get anything, right? We are doing, so that's where the difference between karma and sakarma comes. When people, devotees, do karma to get some material gains, that's sakarma. But our karma is when we do the devotional services just because of the love of the God, just because we love speaking about God, we love hearing about God, because that's what the teacher has said, our spiritual master, that we should spread the word around, not to get anything back in return, nothing whatsoever. So that's what sakarma and akarma is. And this is what mantra 4 says, that it's hard to understand Krishna, but if we will take the shelter of the Guru, Sadhu and Sangha, then we can understand. And then we will develop that spiritual vision which Krishna gave to Arjuna, which enabled him to see the universal form of Krishna. So the very first thing, absolute truth, can't be understood by speculation. So as we said, we cannot just sit and think and try to understand Krishna. So a lot of yogis, they do it, but they understand Paramatma. So Brahman, Paramatma and Bhagwan, they can understand Paramatma, which is part of the Lord. So Krishna is a supreme personality of Godhead,
And Krishna manifests it's himself as a minute part in each and everybody's body next to the soul as a super soul called Paramatma. Right? So when the yogis, they meditate, they can understand Paramatma. That's possible through meditation. But going forward, to reach to Bhagavan realization, we have to get to devotional service. So rather than going to the meditation mark, we go straight to the devotional service, and Brahman and Paramatma realizations happen on the way to Bhagavan realization. We don't have to sit and do separate kind of meditation. And of course, we do 16 minimum 16 rounds of Mahamantra, which takes roughly 1.5 hours, nearly 2 hours to do. And that's a mantra meditation itself. So we get all those benefits inclusive in devotional service. So that's the very first thing. तो हमने कहा कि भगवान जिनको पुराणों में Hare Krishna, Mataji, please. Yes, but Hare Krishna, Prabhuji. This is just something on the doing 16 rounds, and as you just said, it can be done in 1.5 hours. To do that, we must be chanting quite fast to get into 1.5 hours, isn't it? Yes, Mataji. It's that's the reason I said 1.5 hours to 2 hours, because some devotees, they chant very fast and they can complete round in 5 minutes. Other devotees, they take so 7 seems to be the average, but some devotees, they go very slow and they take 10 minutes. But between 5 to 10 minutes, sometimes based on, Narsimha Chaturthi was there on Sunday, some devotees were busy and they know that rest of the day they will be very busy. So they complete on those days even faster. Okay. It's not ideal, but because either they sit back and relax and do their chanting, or they go out and they do the devotional service, which will help everyone else in the temple. So sometimes it's a trade-off between these two. But yes, if you do in one go, it's possible in 1.5 hours, and sometimes you go slow, sometimes you go fast. But you're right, Mataji. If you just hear and listen somebody doing it, and when we do in the congregation sitting together, it's a beautiful experience, because the vibrations are there, and you could just, these days we can do on Zoom, but otherwise when I used to go to Manor, I was in Bhakti Center in Harrow. And in the morning, Mangla Arati time, just after Mangla Arati, so we do Mangla Arati in the morning, just after Mangla Arati, around 5 o'clock, from 5 to 7, in between those 2 hours, everybody sits and we all do 16 rounds together in one go. And it's a very nice side. So Matajis are there on one side and Prabhu's on other side. And Tulsi Maharani ji is there in the middle, because it's right after Tulsi Arati. So a lot of devotees, they go round and round. Sometimes they sit down, sometimes they get up, and it's a different pace. But anyway, between 5 to 10 minutes, Mataji, I've seen different devotees doing different. Yeah. Okay, thank you, Prabhuji. Thank you. And chanting, Prabhupaji always said that whatever we do, everything else is supporting us to do chanting. If anything we do is not helping in our chanting or somebody else's chanting, then we are not getting the full benefit of that. We are not really doing the devotional service. So anything we do the lecture, we hear the lecture, we are cooking, anything we do, that should improve the quality of our chanting. Now, obviously 16 round is the quantity, but the quality is the Krishna consciousness. While chanting, what are we thinking? So chanting is the topmost. Even when we distribute books, so while we're distributing the books, the realizations we get there, the faith and the trust in the name of the Lord, and that the name of the Lord is the only thing which can save us, that consciousness develops
slowly, gradually. And then when next morning we sit down for the chanting, then we realize that our chanting gets even better and we can feel it. And not only we can feel it, people around us, they can feel it. And again, it's like a meditation. So anyone who gets up from the meditation is certainly very calm, very composed, and able to make very wise decisions, because you don't panic so much on the face of diversity when the things go wrong. So chanting is the topmost quality we need to develop as the sadhakas, we say. So devotees, there are different types of different kinds of devotees. We are practicing devotees called sadhak. So being the sadhakas, we need to always focus on the Krishna consciousness aspect, that not what we are doing it, but in which consciousness we are doing it. We always need to be in Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for that question. So revelation helps us understand God and his energies. So we went through and we understood the energies, and we will quickly remind ourselves. So the God, we cannot see God, but we can see the energies. We cannot experience God. Oh, we can see God and we can experience God, but maybe at our level we can't see God. Maybe at our level we cannot experience God. Sometimes maybe we can, some of those experiences we have, but much more easier it is to see the energy of God, to experience the energy of God. And similarly, always the example. So maybe you can see half of my face is dark. The reason being I'm sitting in the room where half of the wall is a window and the sun is bright outside. So because of that, the sunlight is coming on one side, it's dark on the other side. So you can't see the sun, but you can see the sunlight, and you can say wherever I am at the moment, the sun is out there. So that's how, through the energies, we can understand that the energies of the Lord, they are there, so the Lord is there. And we can experience Lord through that way. One of the great example we say, or Krishna said to Arjun, that I am the taste in the water. And the very first thing in the water, most of the people drink water, right? Very first thing in the water, drink water. In the day, drink water. And the taste is Krishna. So which means that even this is just a simple thing to do. This is such a mundane thing to do, to drink water. But even while drinking water, we can think of Krishna. तो जिस तरीके से हमने कहा कि भगवान को समझना फिर भी मुश्किल है, लेकिन भगवान की जो एनर्जीज हैं उनको अगर हम समझें तो भगवान को समझना और थोड़ा इजी हो जाता है. जैसे कि सूर्य को देखना थोड़ा सा मुश्किल है, सूर्य कितनी दूर है, सूर्य है भी या नहीं है, क्योंकि हमें इतनी दूर से दिखता है, पता नहीं क्या है. कुछ लोग कहते हैं वो तो बस एक आग का गोला है, लोग ऐसी सूर्य सूर्य कहते हैं. प्लैनेट्स है, कॉमेट है, क्या चीज है, लेकिन सूर्य की रोशनी को हम जरूर देख सकते हैं. सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है और हमको ऊर्जा का एहसास होता है. हम इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो इसी तरीके से भगवान हमें दिखे ना दिखे, भगवान की जो भी एनर्जीज हैं उनको अगर हम समझें तो हम भगवान को समझने में बहुत बहुत हद तक हमारे लिए ये सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं इजी हो जाते हैं समझने के लिए. तो इसी तरीके से भगवान को समझाने की कोशिश करी है श्रील प्रभुपाद जी ने इन पर्पस के अंदर. And the next thing, as we are limited, can we understand unlimited only through his revelation? So that's another point, that because we are limited. Like I got the glasses. Without glasses, I can't even see things which are there right in front of me. But even with glasses, there are many things we can't see. For example, air, we can't see. Now, of course, air we can't see, but we can hear air. But what about different wavelengths, different noises? So it says these days, especially in the part of the world I'm in, South London, there are many foxes around. So there's green area. Due to the green area, due to the wood, the foxes are around. So some people in the garden, they have put the devices. Those devices, they emit different wavelengths of noises. We humans can't hear that, but the foxes can hear, and because of that, foxes, they don't come along. Now we can't. We are so limited that we can't hear that.
There are many things we can't see. There are many things, as I give the example on the phone, sometimes we misunderstand who is the person, right? That's how limited we are. So to understand Krishna, to understand the Lord, scriptures are very, very useful. And those who have understood the scriptures, not through mental speculation, but through Guru Shishya Parampara. And that's where the whole authority comes into practice. So again, when somebody goes to Oxford, somebody goes to Cambridge, it's not the teachers there. They are the only main thing. The university itself, they have the name they have. So nobody will say, I have my teacher was that person. But yeah, people can say, and that teacher could be great, but much greater than that is when somebody will say, I went to that university, I went to Harvard, I went to Oxford, I went to Cambridge. And those universities got the name. Doesn't really matter who teaches. But of course, we have the reliability, we have the trust that whoever will teach in that university must be of great expertise in their own field. Similarly, when we are associated with devotees who are part of a great organization, then we can rely that, okay, they are from that organization, so they must be good, they must be authentic. तो जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपनी तरीके से नहीं समझ सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया कि जहां हम रहते हैं लंदन में, यहाँ पे क्योंकि काफी ग्रीन एरिया है, इसकी वजह से फॉक्सेस आती हैं. और फॉक्सेस को भगाने के लिए, स्पेशली वो गार्डन में आ जाती हैं बैक डोर से और फिर काफी प्लांट्स वगैरह को हानि पहुंचाती हैं, तो उनके लिए कुछ लोग अपने गार्डन के अंदर ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं. वो डिवाइसेस ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी वेव्स निकालती हैं, ऐसी नॉइस निकालती हैं जो हमको, ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन वो फॉक्सेस को सुनाई देती हैं. और फॉक्सेस को वो पसंद नहीं है, इसकी वजह से फॉक्सेस उन गार्डन्स में नहीं जाते हैं जिनके अंदर वो डिवाइसेस लगे हुए हैं. तो इससे पता लगता है कि हम कितने ज्यादा लिमिटेड हैं. जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिना चश्मे के नहीं देख सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो चश्मे के साथ भी नहीं देख सकते, जैसे कि हवा, लेकिन हवा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल रहता है. तो इसलिए हम अपनी इंद्रियों के ऊपर या इंद्रियों के हिसाब से अगर भगवान को समझने की कोशिश करें तो बहुत दिक्कत रहती है. लेकिन गुरु, साधु, शास्त्र, अगर हम इनका शेल्टर लें, तो इनका आश्रय लें, तो हमारे लिए जो आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये बहुत सरल हो जाता है. इसको हम समझेंगे. लास्ट पॉइंट जो प्रभुपाद जी रेज करते हैं, प्ले योर पार्ट एंड यू विल बी गिवन अंडरस्टैंडिंग, कि हमको क्या करना है. लेकिन उससे पहले डिटेल्स के अंदर वेरी क्विकली जो हमने बात करी, एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय स्पेकुलेशन. Krishna's childhood pastimes we have seen, Brahman realizations we talked about, कि भगवान कृष्ण ने कब मेडिटेशन करी बचपन में, कि बचपन में 4 दिन के 5 दिन के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया, शटकासुर का वध किया. तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना बहुत बहुत मुश्किल है. After that, how revelation works, we have talked about it. Mainly the energies of the Lord, right? We talked about the fire and the heat and the energy and the light of the fire. So this gives us the principle of Brahma Madhava Gaudiya Math, Achintya Bheda Abheda. This is the concept which Chaitanya Mahaprabhu ji introduced. Achintya Bheda Abheda. Achinta, something we can't even think about, inconceivable. Abheda, Bheda means Abheda, Bhed means difference, Abheda, no difference. Between us and God, there is no difference, but at the same time, there is also a difference. For example, the fire is there. When we see the fire from the fire, when we see the energy from the fire, when we see the light from the fire, when we get the heat from the fire, we say the fire is there. Even though we can't see the fire at the moment, but we can say. Very similar thing,
sunlight is there, the energy of the sunlight, and we say sun is there, even though we have not seen sun. So at the same time, sunlight is a sun, but it's not sun. Right? So that's how we can understand. There are many more examples we can think of. तो जिस तरीके से हमने कहा कि भगवान और भगवान की जो ऊर्जाएं हैं, भगवान के जो एक्सपेंशंस हैं, वो सेम भी हैं एक ही समय पे और नहीं भी है. जैसे कि अगर कहीं पे अग्नि जल रही है, तो अग्नि से जो ऊर्जा निकल रही है, अग्नि से हम देखते हैं बहुत लाइट आती है, वो उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये आग अग्नि ही है, लेकिन वो अग्नि नहीं है. और एट द सेम टाइम अग्नि है भी. जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूर्य की जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है हमारे ऊपर, हम कहते हैं हाँ सूर्य, मैं सूरज में हूँ, सूरज मेरे ऊपर है, लेकिन सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी है. लेकिन बात भी सही है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी जो है सूरज से ही आ रही है. सो एट द सेम टाइम समथिंग व्हिच कुड बी द सेम एंड इट कांट बी सेम, बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. The quality is the same, the quantity is different. And this is what we are. We are God. Yes, that's correct. We are God. But we are part and parcel of the God. We are not fully God. The Sanskrit words are Bhuta, and we call it Anu and Vibhu. So we are very small part of Krishna. But Krishna is Swarata, Krishna is complete, and we are just minute part of Krishna. But because we are part of Krishna, because we are part of the Lord, we are part of the God, that's why we can also consider ourselves as God. So at the same time, this is true, but this is not true. So again, quality-wise is true, but quantity-wise is not true. So we need to understand when we discuss this with many of the devotees around the globe following different concepts. So now, the last bit we were saying, where we said, play your part and you will be given understanding. So we have already discussed others. तो हम पहले बाकी सारी चीजें समझ चुके हैं कि हम क्या नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि लगाकर, और अगर हम डिवोशनल सर्विस करें तो भगवान हमको वो ज्ञान देते हैं. भगवान ने कहा भी है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में हूँ. हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान में ही देता हूँ. भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो ज्ञान देता हूं. तो वो ज्ञान भगवान सबको देंगे, जो जो डिवोशनल सर्विस और जो जो उस ज्ञान का अधिकारी है. राइट? जिस तरीके से क्लास 2 का बच्चा अगर क्लास 10th में जाके बैठ जाएगा, तो टीचर क्लास 2 के बच्चे को वापस भेज देगा कि आप क्लास 2 में जाओ. इसलिए नहीं कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन टीचर को पता है कि वो बच्चा अभी क्लास 10 के लिए रेडी नहीं है. इसी तरीके से भगवान हर उस इंसान को ज्ञान देते हैं जो कि रेडी होता है. और रेडी होने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें भक्ति करनी होती है, और भक्ति के अंदर सर्विस करनी होती है. हमें डिवोशन करनी होती है, बट डिवोशनल सर्विस करनी होती है. सो हाउ टू प्ले द पार्ट इज द मेन थिंग. दिस इज द एसेंस. बी अ पार्ट एंड नॉट बी अ पार्ट. तो भगवान की जो पूरा मटीरियल वर्ल्ड है, इसका हमें पार्ट बनना है, लेकिन इससे अलग नहीं जाना है हमको. तो जिस तरीके से हम बात करें कि अगर हमारा शरीर एक नाव के रूप में है, तो वो नाव मटेरियल वर्ल्ड जो संसार है उसके अंदर ही रहेगी. नाव ऐसे नहीं कर सकते कि पानी से निकाल के बाहर खड़ी कर दें, क्योंकि हमें भवसागर पार करना है. लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का जो पानी है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए. तो उसी तरीके से हमें सारे काम करने हैं, लेकिन वो काम करते हुए जो भौतिक संसार कि जो जिसे हम कलयुग में कली कहते हैं, वो कली की जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए. So what does this say? Our material talents come from God and are best used to glorify God. Then they will bring us the greatest happiness and will do the best service for us. So how to be in Krishna consciousness? How to be in Krishna consciousness? Whatever we are doing. Now, the very first thing to identify is whatever capabilities we have, whatever knowledge and skills we have, Krishna has given to us. And Krishna can take those anytime. तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये होती है कि हमारे अंदर ईगो होती है. हम कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रीजन है कि हम
भगवान के नजदीक नहीं जा पाते क्योंकि हमारे अंदर ईगो है और वो फॉल्स ईगो है। ईगो ट्रू भी हो सकती है, ईगो का मतलब है आइडेंटिटी। फॉल्स ईगो है कि हम मास्टर हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब मैंने अपने कर्मों से किया है। ये गलत है, ये झूठ है, ये फॉल्स है। और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो ईगो है, इसकी वजह से हम फंसे रहते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि जो भी हमको स्किल, नॉलेज, ज्ञान मिला है वो भगवान की तरफ से मिला है, तब हम इन सबको भगवान को ही अर्पित करेंगे। जो भी करेंगे, जैसे ये प्रभु जी पिक्चर के अंदर कुकिंग जानते हैं, तो ये कुकिंग करेंगे और ये भगवान के लिए कुकिंग करेंगे। चाहे गृहस्थ में रह के घर के अंदर हो, अगर घर के अंदर प्रभु जी माता जी कुकिंग करते हैं तो वो ये विचार से कुकिंग करते हैं कि भगवान को भोग लगेगा। भगवान को भोग लग के जब घर के परिवार वाले ये प्रसाद खाएंगे तो वो भी कृष्ण भाव में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। वो भी मटेरियल जगत से अलग होके स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इस भाव से जब घर के अंदर प्रसाद बनेगा तो फिर वो एक्टिविटी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज होते हैं जो भगवान की कथाएं सुन रहे होते हैं, प्रसाद बनाते वक्त लेक्चर सुन रहे होते हैं, कीर्तन सुन रहे होते हैं भगवान के, तो वही कॉन्शियसनेस में जो खाना बनता है वो प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको खा के, प्रसाद को ही खाकर कृष्णा कॉन्शियसनेस इंसान हो जाता है। जो भी टैलेंट हमारे पास है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक there was one analogy in, well, one anecdote, a small story. So this happened in London actually, because London was the headquarter of the European temples we had at that time. And Srila Prabhupada ji used to come over here, and all other temple presidents or spiritual leaders, they used to come and they used to offer things to Srila Prabhupada ji, not material things, but they used to say, Prabhupada ji, we have done so much. Like Prabhupada ji, we have distributed so many books. Prabhupada ji, we have opened a new temple. Prabhupada ji, we have reached out to so many more new souls, so many new devotees. And Prabhupada ji used to get very happy that we are spreading the name of the Lord, and more devotees are getting attracted towards Krishna. So this was the offering, not a material offering, not to say, Prabhupada ji, this is a check of £1 million for you. No. So this was a spiritual offering. And Srila Prabhupada ji used to hear that. And then one of the devotee, he comes around and he said, Prabhupada ji, I've heard these great devotees and they have done so much. I also would like to do. What shall I do? And Prabhupada ji said, what would you like to do for Krishna? And then he said, Prabhupada ji, I will do anything you say. And Prabhupada ji said, that's okay, that's very good. But what would you like to do for Krishna? And then that Prabhuji again said that, Prabhupada ji, anything you will say, I will do. Prabhupada ji said, you need to understand that, and this is what you see on the slide. Prabhupada ji said that this is devotional service. This is very individual. Individual means, don't you see that somebody else is doing it, so I also need to do it? No. Whatever you are good at, what you are good at, you're very individual, because the relationship between us and Krishna is very individual. Something I do or Krishna, you don't have to repeat me. You do what you like to do. And then it's volunteer, not that I have asked you or somebody else has asked you. It's volunteer and it's spontaneous, which means you get the feeling that you want to do it, not because you got encouraged, which it's good to get encouraged, but not because you have seen someone else doing it, so that's why you want to do it. It's spontaneous. So tell me, what would you like to do for Krishna? Not that Krishna needs something, not that I need something. What would you like to do for Krishna? And then that Prabhuji said, okay, Prabhuji, okay, Prabhupada, I understood what you meant now. Let me think and I will come back. Prabhupada said, very good. Go think, what would you like to do for Krishna?
and then come. Don't compare yourself with anyone. And then that Prabhuji came back, and for many years he served, and he was a kind of mechanic. And he said that he will, so a lot of mridangas used to come from India, and during the transition, they used to come by ship. They still come by ship. They come by ship, and some of the mridangas, they used to get damaged. And then this Prabhuji said that I can mend them. I can fix them. So Prabhupada said, very good, very nice. We have many mridangas, the previous ones, and they keep coming and they keep getting destroyed. If you can fix them, that would be great. And for many years, he did it. For many years, he did it. So we also need to understand, we can certainly get inspired and encouraged by others, but we don't need to imitate anyone, right? Because devotional service is very individual, it's voluntarily, and it's spontaneous, what we feel like. तो जिस तरीके से हमने देखा एक एनेक्डोट, एक शिला प्रभुपाद जी की पास टाइम, जिसके अंदर प्रभुपाद जी लंदन में हुआ करते थे, जो उस टाइम का हेडक्वार्टर था, जब बहुत सारे यूरोप के जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स थे वहां पर आके प्रभुपाद जी को ऑफरिंग दिया करते थे, जिसके अंदर वो प्रभुपाद जी को कहा करते थे कि उन्होंने भगवान के लिए क्या किया है, कि उन्होंने बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, उन्होंने कृष्णामृत में और भक्तों को जोड़ा है, और काफी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि दूर जाकर किसी विलेज में जाके, किसी नए टाउन में जाके भगवान का प्रचार किया है जहाँ पहले प्रचार नहीं होता था, या स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, कहीं पे भी जहाँ पे पहले नहीं होता था वहां पे अब करने की कोशिश हो रही है, उसे आउटरीच प्रोग्राम्स कहते हैं। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे आके कह रहे थे। तो एक डिवोटी थे जिन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इन सब से, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ आपके लिए? तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप क्या करना चाहते हो भगवान कृष्ण के लिए? तो उन्होंने कहा जो भी आप कहोगे। प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि जो भी मैं चाहूंगा वो नहीं, आप क्या करना चाहते हो? तो फिर उन्होंने यही कहा, नहीं प्रभुपाद जी, कुछ भी, जो भी आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आप करना क्या चाहते हो? तो फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि ये जो भक्ति है, भक्ति में जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, ये बहुत इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो आप भी वो करो, और ये वॉलंटरीली है। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा तो आप करो, और ये स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, आपके दिल से एक उमंग उठेगी कि मैं भी करना चाहता हूँ भगवान के लिए कुछ, मुझको भी भगवान का नाम लेना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए कि भगवत गीता की क्लासेस होती है, मैं अपने किसी मित्र को लेकर आऊं, मैं कुछ करूं, मैं किसी से बात करूं। मैं अगर लंदन में रहता हूं और इंडिया में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूं, तो जब भी बात हो तो भगवान के बारे में बात हो, ये नहीं कि पूरी भगवान के बारे में बात हो, और भी चीजों की बात करनी है, लेकिन बीच में भगवान की बात जरूर हो। तो ये स्पॉन्टेनियस है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा को क्या चाहिए आपकी सर्विस, उसके बारे में नहीं, आप अपने दिल से कृष्णा के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो आपके दिल से होगा, वो वॉलंटियर होगा, वो इंडिविजुअल, आपका अपना पर्सनल भगवान के साथ होगा, तो वो बहुत ही प्रिय होगा भगवान को। तो जैसे भगवान कहते ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कोई मेरे को प्यार से, भक्ति से कोई फूल, पत्ता, अगर ये पानी, छोटी छोटी सी चीजें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं बाहर से, वो भी अगर अर्पित करें, लेकिन किस कॉन्शियसनेस से, डिवोशन से, भक्ति से ऑफर करें, तो वो चीजें क्या ऑफर कर रहे हैं वो नहीं है, किस चेतना से, किस कॉन्शियसनेस से ऑफर कर रहे हैं वो है। तो उस चीज के अंदर हम देखते हैं कि फिर वो जो भक्त थे, जो प्रभु जी थे, उन्होंने, वो मैकेनिक का काम करते थे, तो हाथ के कारीगर थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को, उन्होंने उस टाइम पे कहा प्रभुपाद जी मैं सोच के बताता हूँ, फिर बाद में आए, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी बहुत सारे मृदंग इंडिया से आते हैं, भारतवर्ष से, जो कि बीच में आते आते खराब हो जाते हैं, तो मैं उनको फिक्स कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, और बहुत सालों तक उन्होंने फिक्स किया, और कुछ और डिवोटीज को उन्होंने सिखाया भी कि किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। वो शिला प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे प्रभु जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और हम कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें, जानवी हैरिसन माता जी हैं, तो
माता जी ये लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये माता जी मैनर में, भक्ति वेदांत मैनर लंदन वॉटफोर्ड में जो टेम्पल है वहां पे माता जी ड्रामा कर रही हैं, और आई थिंक ये प्रहलाद महाराज जी के ऊपर है, और ये भी एक ड्रामा है। और माता जी का यूट्यूब चैनल है, माता जी ग्रैमी अवार्ड विनर हैं या नॉमिनीज तो काफी टाइम रही हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक बनाती हैं। अभी इस्कॉन का जो 50th एनिवर्सरी हुई थी यहाँ पर लंदन में O2 अरीना में हुई थी, आई थिंक हम गए थे, हमने माता जी को लाइव सुना था। इनफैक्ट मैंने माता जी को पेरिस के अंदर भी लाइव सुना था, और वो बहुत ही, लंदन में बहुत बड़ा था सेशन, लेकिन वहां पे बहुत छोटा, बहुत बहुत ही कम लोग थे, और बहुत बहुत ही अच्छा। अगर माता जी को नहीं सुना आपने तो यूट्यूब के ऊपर अगर जानवी हैरिसन माता जी का नाम डालेंगे तो बहुत कुछ। तो माता जी को म्यूजिक है, so she knows music, she compiles musical audios, videos, albums for Krishna, and then many other devotees like that. So this is one of the great example. What do we have? What we can offer? What do we have? Krishna has given to us, and Krishna can take it anytime. So we remember the Bhagavatam story where Arjun was the main warrior in the war of Mahabharata. But same Arjun, same Gandiv, same knowledge he had, but Krishna was not there with him. As soon as Krishna departed back, Krishna Dhamo Pagate. There is a very nice verse in Bhagavatam. But when Krishna departed, then Krishna said to Arjun, Arjun, take my wives from Dwarka, I think from Dwarka to Hastinapur. And there is a place near Porbandar, I think, in Gujarat. That's where Arjun was resting and around a tree. And the local dacoits, just with their sticks, they came and they put the rope around Arjun. And a lot of princes, the queens of Krishna, they jumped in the water. And the same Arjun who fought the battle, he could not fight with those sticks. Why? Because Krishna was not there. And we can see today a lot of people, so there was a great doctor. I think there is a real movie on this as well. So there was a great doctor, he was a brain surgeon, the brain surgery and the heart transplant, the brain surgery seems to be the most difficult one because there are so many different nerves there, and his hands were perfect. And he used to say like the hand of gods to himself. Like Muhammad Ali also said something similar, and we can see what happened with him. Similar thing that happened to this guy. He got a disease, and now his hands are shaky. Whatever he was known for disappeared in a day or in a moment, basically. But next day, nobody could get him for the brain surgery. And the day before, he was renowned for the brain surgery in the world. I think there is a movie on this. The actor who acted as Sherlock Holmes, the Britisher guy, he acted as that doctor, and then he went spiritual. And this is based on the real story. So, and of course, we have seen many other people who are very clever and smart. And in one day, if they develop some kind of disease, they meet, accident happens, and that's it. Everything we were known for, what we said, it's us, could go in one go. Because Krishna has given us, Krishna can take it. It's as simple as that. तो हमने देखा कि जानवी हैरिसन माता जी, जिनको म्यूजिक का ज्ञान उनके फैमिली से, उनके पेरेंट्स से मिला, लेकिन अगर कहें तो कृष्णा से मिला, तो वो अब कृष्णा की ही सेवा में वो सारा म्यूजिक लगाती हैं। तो आपने अगर जानवी हैरिसन माता जी को नहीं सुना तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि जिसके अंदर एक डॉक्टर जो कि ब्रेन सर्जन थे, और बहुत फेमस ब्रेन सर्जन थे, क्योंकि उनके हाथ बहुत प्रिसाइज थे, वो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस कर पाते थे, क्योंकि उनकी प्रिसीजन बहुत अच्छा था। जहां जो दूसरे डॉक्टर्स घंटों लेते थे, वो मिनट्स लेते थे, ऐसा उनका रिकॉर्ड था।
और वो खुद उनका ऐसा मानना था हैंड ऑफ गॉड और हैंड ऑफ समथिंग ही यूज्ड टू से, वो ऐसा कुछ कहा करते थे कि ये तो भगवान के हाथ है मेरे। लेकिन उनको फिर एक बीमारी हो गई, पार्किंसंस बीमारी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हाथ हिलने लगते हैं। तो वो बीमारी जैसे ही उनकी डेवलप हुई, वो ब्रेन सर्जन कहलाने लायक नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद वो कभी कोई सर्जरी कर नहीं पाए। और वो इतने हम्बल हो गए उसके बाद कि जिस चीज को वो खुद अपना मानते थे वो भगवान की दी हुई थी, और उसके बाद फिर वो आध्यात्मिक जगत में उतरे और फिर उन्होंने भगवान को मानना शुरू किया। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिंदगी भर लोग काम करते हैं जिस चीज के लिए, और जिस चीज को अपना मानते हैं, भगवान एक क्षण में वो चीज ले लेते हैं, और तब लोगों को पता लगता है कि ये चीजें हमारी अपनी थी ही नहीं। तो यही कहा गया है कि जो भी चीज हमको भगवान से मिली है हमें भगवान के लिए ही अर्पित करनी चाहिए। गौर गोपाल प्रभु जी, इंटेलेक्ट कहें, बोलने का तरीका कहें, स्पीच कहें, वो सब जो उनको मिला है वो भगवान के लिए ही लगाते हैं। उनकी बहुत सारी कोटेशंस हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। एक बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप ले सकते हैं। गौर गोपाल प्रभु जी के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है। प्रभु जी आई थिंक जुहू टेम्पल से हैं और आजकल काफी ट्रैवल करते हैं। Spiritual scientist, renowned bhakticourses.com. If any one of you like to do any of the courses, Bhakti Shastri course, and even Shri Īśopaniṣad. So a lot of slides I use, they come from Chaitanya Charan Prabhu ji. तो बहुत सारी स्लाइड जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करता हूँ चैतन्य चरण प्रभु जी की स्लाइड्स हैं वो। और प्रभु जी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि प्रभु जी से भी मैं फेस टू फेस मिला हूँ। प्रभु जी यहीं लंदन में आए थे, और कभी प्रभु जी को, अगर आप में से किसी ने प्रभु जी को सुना है तो शायद आपको, मुझको नहीं पता था, मैंने प्रभु जी के बहुत सारे लेक्चर सुने थे, मैं जूम में लाइव प्रभु जी से कई बार बात करी थी, लेकिन जब तक मैंने प्रभु जी को साक्षात देखा नहीं था, मुझको ये नहीं पता था, जो शायद आपको भी ना पता हो, पिक्चर से वीडियो से देख के नहीं पता लगता, कि प्रभु जी को पोलियो है। प्रभु जी चलने के लिए बैसाखियां यूज करते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी लेक्चर के अंदर, जितने भी आज तक मैंने सुने हैं, प्रभु जी ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पे जब आए थे कुछ लोग जो देख सकते थे प्रभु जी को पोलियो, तब किसी ने उसकी बात करी, तब प्रभु जी ने बताया था। लेकिन क्योंकि प्रभु जी चल नहीं सकते, इसलिए प्रभु जी बैठकर इतने सारी बुक्स प्रभु जी ने लिखी हैं, और इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स प्रभु जी करते हैं। इस्कॉन के फ्यूचर टुडे सेशंस हैं जो प्रभु जी का बहुत फेमस है, जो प्रभु जी अब 2022 में भी कर रहे हैं। और प्रभु जी का मॉन्क पॉडकास्ट है जो प्रभु जी ने आई थिंक 1.5-2 साल पहले लॉकडाउन के अंदर शुरू किया, बहुत फेमस। बहुत सारे हिज होलीनेस, बहुत सारे टीचर्स जो फेमस हैं, उनसे प्रभु जी ने बात करी, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें हैं जो की हैं उनसे। तो अगर आप चाहें तो मॉन्क पॉडकास्ट यूट्यूब पे अगेन फ्रीली अवेलेबल है, प्रभु जी के यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही हमारे साथ राधे श्याम प्रभु जी हैं, जो कि बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स करते हैं। गौरांग दर्शन प्रभु जी हैं, कल प्रभु जी लाइव थे, बच्चों के लिए प्रभु जी कर रहे हैं। प्रभु जी ने सुबोधनी लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि मंत्रा 4 को फुलफिल करते हैं। और अगर हम एक चीज मंत्रा 4 से सीखना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं कि पहला, भगवान को समझना हमारी अपनी बुद्धि से बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान को समझने के लिए अगर हम भक्ति में रह के सेवा करें तो भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। So there is a bit more. Maybe next time we will try to get a bit more deeper. And this slide now, this is from राधे श्याम प्रभु जी फ्रॉम पूना। तो ये जो स्लाइड अभी है ये राधे श्याम प्रभु जी की है, और हम नेक्स्ट वीक इस स्लाइड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक स्लाइड में हमने अब तक जो किया है, जो सुना है, जो पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने जो अपने परपट में समझाया है मंत्रा 4 के, वो इस एक स्लाइड के अंदर फ्लो चार्ट के रूप में राधे श्याम प्रभु जी ने
बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, तो हम इसको दोबारा से समराइज करने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग टीचर्स, अलग अलग प्रेजेंटेशंस, अलग अलग स्लाइड्स से हमको अलग अलग चीजें समझने में हेल्प मिलती है, and that's the reason I try to compile from different teachers so we can understand or we can deepen our understanding. So I hope today's session was useful. If you haven't already started, I will request you humbly to pick the bead and start chanting. And if you have not started any devotional service, then devotional service is the way to improve the chanting. So please come forward and start doing, or thinking at least of something, at least have the desire to do. Hare Krishna. Look forward for your association, and I would like to thank you, each and every one of you, for your association today. Look forward for your association next week at the same time, 9:30 in the morning, here London time. With that, Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, jai jai, Hare Krishna. Radhe Shyam. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Thank you so Krishna. much. Hare Krishna Ji. Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Bhagavati Mataji. Hare Krishna. Dhanvat Pranams.